behalf of Team SDPI, I welcome you all to this webinar regarding the challenges faced by Pakistan's economy and the private sector's perspectives regarding this. Today's discussion is just an opportunity to hear from the private sector about its struggles currently, but also what exactly do they want to propose to the government and what the solutions and the way forward should be in this scenario. So before I proceed to the discussion, there are a couple of housekeeping announcements that I'd like to make. Firstly, if I may please request our speakers to keep their microphones off when they're not speaking to ensure good quality audio for everyone. Speakers are also encouraged to switch on their cameras when speaking, especially so that if their network allows them to do so without any disruptions. If all panelists are comfortable, the meeting will be recorded, and we are also going live on our social media pages. We welcome you to revisit the discussion later on either of our social media pages or our YouTube page as well, and feel free to share it with your network. We also invite questions and comments from our audience in the chat boxes. Please feel free to speak in Urdu or English, whatever medium you're comfortable with. I, as moderator, will prompt you once we're pressed on time. Moving forward, I'm very grateful to all the panelists that have joined us today and taken out time from their busy schedules. Allow me to briefly introduce them before I proceed to the discussion. We have with us Mr. Kashif Anwar, who is President of the Lahore Chamber of Commerce and Industry. We have Dr. Shehla Javed Akram, who is the founder of the Lahore Women Chamber of Commerce and Industry. We have Mr. Rehan Bharara, who is chairperson of Faisalabad Garment City. And we also have Mr. Mahmood, who is director of Mahnoor Group of Industries. Thank you to you all for taking out time for today's session, and we look forward to hearing from you and your interventions as well. So moving forward, firstly, I'd like to, and of course, we also have Dr. Vaqar Ahmed, who is Joint Executive Director, and who I'll be requesting for his welcome remarks. Sir, over to you. Thank you, Mahnoor. Appreciate this introduction, and thank you to our esteemed panelists who have taken time out of their very busy schedules, and of course to our attendees who are joining us here in the Zoom space as well as over Facebook and Insta Live. So thank you very much. I think today's meeting is of very important it carries very important background. One is that we really need to now hear from the private sector that what is the way forward, not just for the economy, but of course the way they now have to pivot, given that they are the most important stakeholder in the economy. Second, of course, one is also reminded that the government has requested proposals from the private sector as well as the civil society organizations like SDPI to compile the proposals for not just the changes in the Finance Act, which are going to take place through the ordinance, or as the mini budget, as we call it, but also proposals for the federal budget that is whose construction has now been initiated by the federal government and would be finalized somewhere around April. Third, we believe that there is a short-term and a medium-term aspect to our discussion today. There are certain measures which, of course, the country and the policymakers need to take in the short term to really stabilize the macroeconomic fundamentals. Second is that there are some structural issues in the economy which have already been highlighted in the IMF staff report, which also need to be addressed. And of course, while there is recognition of these issues, there's also a political cycle through which the country is passing from. And of course, that political stability or the lack of can hurt the economy or our drive towards those structural reforms in the medium term.
Now, of course, it is heartening to note today's news that IMF has agreed to send its mission, which will be around from 31st of January until the 9th of February. Now, this is good news. However, there are some decisions which the government has to do. Of course, mini budget is one, but of course, there are other policy measures as well, which the government would have to take as prior conditions for reaching a staff level agreement. Of course, this includes some additional tax measures which the government is thinking about. This includes increase in electricity and gas tariffs. This includes PDL and a host of other measures which had been, of course, put on the back burner, which, of course, the country had decided as part of the 7th and 8th review, but probably the progress on those was slow. Now, of course, when the country is trying to achieve this, there is, of course, another challenge, which is of high interest rate and the weakening of rupee, which, of course, exacerbates the overall macroeconomic challenge. So I think one objective of today's meeting, and I look forward to being educated by our esteemed colleagues who are all business leaders in their own right. They have really established their businesses, they're entrepreneurs of global repute. I think what we need to hear from them is that how is, firstly, the situation really impacting their businesses, particularly the export segment. Second, of course, while the challenges may be known, of course, the popular media continues to report the business community's challenges. We also want to hear from our colleagues, from our esteemed panelists, the solutions which they would like to offer to the government, which, of course, SDPI report will be carrying, and SDPI's report has to go out in the first week of February to the Reform and Resource Mobilization Committee, which is based in the Ministry of Finance. So it's not just the challenge part that one is trying to address. Today's discussion is more about the solutions that one is looking towards. Having said this, we believe that all four of our business leaders would be sharing their thoughts today. They are also sort of mentors to the smaller firms in the economy who are being impacted, and many of them are facing a shutdown given the current situation. So one would also like to seek their advice. What would their message be to the smaller segment, the micro and smaller segment of the business community? How could they pivot in this scenario, and what could be the budget proposals going forward to really protect these firms from shutting down their operations, being affected going forward. Finally, there is a welfare impact of all this situation. While, of course, the business community and their balance sheets are being hurt by these challenges, we also understand that it's not easy for the labor, for the poorest of the poor in this country whose livelihoods are linked with the private sector operations. So one is also hoping to touch upon those welfare implications of this challenge and what the government can do to maybe support the private sector in safeguarding the livelihoods of the poorest of the poor, so there are minimal layoffs, underemployment and unemployment during this phase through which the economy is passing. So with these introductory remarks, I once again welcome, and I am thankful to the esteemed panelists who have taken time out, and it's back to you, Mahnoor. Thank you. Thank you very much, Dr. Vaqar. Moving forward, I'd like to start off with the first round of discussion in our webinar today. So perhaps Kashif Anwar Saab, I can start with you. As president of the Lahore Chamber of Commerce, of course, you've had interaction with a major chunk of the private sector. So keeping that in mind, and the several problems that the economy of Pakistan is currently facing, such as the weakening of the rupee, the rising interest rate, and of course, the overall increase in doing business cost. So keeping all of these in mind, perhaps you can just shed light on how this all is impacting the business sector in particular, sir. Thank you very much for inviting me here. और अस्सलाम वालेकुम वकार साहब, आप खैरियत से हैं? There is no doubt in it कि जो currently हम जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, businesses are going to close down, layoffs हो रहे हैं,
इन्फ्लेशन कहाँ का कहाँ चला गया, ये तो प्रॉब्लम्स, जैसा कि वकार भाई ने कहा कि हमें we don't have to talk on the problems, we have to talk on the solutions. तो in our opinion हम ये समझते हैं कि जब तक opposition और government एक के ऊपर नहीं बैठेंगी, रादर अपने गवर्नमेंट किसी अलग पार्टी की और opposition भी किसी और पार्टी की है, तो if we want to be at one page, so we all have to sit at one page, और हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना होगा जो कि शॉर्ट टर्म में हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी को डिसाइड करना होगा कि हमारी चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है, हमें क्या स्टेप लेना है. इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप. Secondly, we need reserves. We need foreign reserves. We have to do immediately anything for the reserves, which government has done yesterday. उसने free float कर दिया और हमारा रुपी 260 के करीब चला गया. तो हम क्यों नहीं हम ऐसा करते कि we should convince IMF for some declaration or some amnesty, जितना भी undeclared फॉरेन रिजर्व्स जो पड़े हैं घरों में, बैंकों में, दैट शुड कम इन द इकोनॉमी, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसके लेवल्स को बढ़ना चाहिए. और हमने जब फ्री फॉल दिया तो अल्टीमेटली आपके फॉरेन रिजर्व्स भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो एक्सपैट्रिएट्स पैसे हुंडी के थ्रू भेज रहे थे और लीगल चैनल्स के थ्रू नहीं भेज रहे थे, वो अल्टीमेटली अब लीगल चैनल्स के थ्रू पैसे भेजेंगे. अब IMF ने भी दे दिया है, इंडिया के वो आ रहे हैं अपने 9th रिव्यू के लिए. और what I think it is the continuation of जो उसने शराइत हैं IMF की कि अपने रुपी को डिवैल्यू करना है 10 से 15%, वो हमने और कर दिया. एंड वी आर गोइंग टू सी मोर चेंजेस. आपके यूटिलिटी प्राइसेस भी बढ़ने को जा रहे हैं. मुझे तो अभी अब ये समझ नहीं आ रही कि जो इंडस्ट्री इतनी इनपुट कॉस्ट हमारी हाई हो गई है वो कैसे सरवाइव करेगी. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि वी हैव टू चेंज द प्रायोरिटीज. Our priority is to increase the exports, or we should take this priority to number 2 to increase exports, and we take the priority to reduce the imports in number 1 by more industrialization, import substitution. So we have to think on number point 1. हम जब अपनी priorities change करेंगे तो ultimately that effect will be trickle down. वो तमाम policies नीचे तक change हो जाएंगी. तो हमारी चूंकि पॉलिसी ये है कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इनपुट कॉस्ट हमारी ज्यादा है, इन्फ्लेशन हमारा ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट हमारा ज्यादा है, कोई चीज और एवरीथिंग वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अब्रॉड. अभी जो हमारा फ्लड भी आया, फ्लड के बाद लाइफ स्टॉक का नुकसान हो गया, कॉटन भी चली गई, आपके फल सब्जियां भी चली गई, वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं. थर्डली इट इज हमारी लाइट चली गई है, लेकिन आई विल कंटिन्यू. Thirdly, it is very important कि हमारे जो आपको चाहिए है, essentials चाहिए हैं, सब्जियां चाहिए हैं. मैं अपने दो हमसाया मुल्क का नाम नहीं लेता, but we are importing those products through Dubai. हम सबको इस वक्त बैठना होगा और सोचना होगा, should we start our trade short term with India or not? Because we are purchasing everything of India via Dubai, which is increasing the cost. तो देखें, it is very important if we want to control the inflation, तो हम उसके जो उसमें cost add होती है हमें उसको reduce करना होगा. And very important step, हम जो काम कर रहे हैं सोलर का, हमने अपनी चाहे ठीक है हमने reduce the duties on the import of solar, लेकिन जो नेट मीटरिंग का रेट है हमने उसको कम किया. द इन्वेस्टमेंट which is needed by the government, private sector is doing that investment. हमें इस बात की रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए और इसको कंपलसरी करना चाहिए कि हर ऐसा नया घर जो 1 कनाल का है उसको अपना सोलर सिस्टम लगाना चाहिए. इंस्टॉल इजी इंटरेस्ट रेट पे आपका इंडिविजुअल लगाएगा. और हमें देखें, जैसा कि मैंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, चार्टर ऑफ इकोनॉमी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि going to do with the floods which we are facing, and in the future we are going to force
बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। हमने क्या सोचा है, व्हाट वी हैव के लिए जा रहे हैं, रिजर्वॉयर्स हम बनाना नहीं चाह रहे, तो वेयर वी आर गोइंग मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो देखें, मेरी समझ में और मेरी नजर में तो अल्टीमेट सॉल्यूशंस यही आते हैं। देखिए अब अगर IMF से आपका होता है 17% आपका कार्बन रेट हो गया, अब 9th रिव्यू में जाते हैं, अब जितनी इन्फ्लेशन आपके डिवेल्युएशन से होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर इंक्रीज इन योर इंटरेस्ट रेट, कि वो आपका और बढ़ जाएगा, विच मीन्स कि यू आर गोइंग टू फेस मोर इन्फ्लेशन, and more inflation means more industry hit, more closure of industries, more job you are going to निकालने के लिए आप जा रहे हो। तो हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म को हमें ये देखना होगा। अब देखें, टैक्स की बात तो पहले हम टैक्स की बात करते थे, अब तो मैं टैक्स की बात इसलिए नहीं करता कि आपकी इंडस्ट्री होगी तो टैक्स पे करेगी ना, आपकी इंडस्ट्री होगी तो वो सारे टारगेट्स पूरे होंगे। अगर आपने अपने टारगेट्स, आप देखें 8,000 कंटेनर आपका खरा है, हम कहते हैं हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हम आपका, अगर मैं शर्ट और पैंची की मिसाल आपको दे रहे, जिप्स नहीं है, शर्ट्स तैयार है, बटन्स नहीं है, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? आपकी मशीनरी रुकी पड़ी है टूल्स के लिए, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स तैयार पर, वो आपके टूल्स रिलीज नहीं हो रहे। तो देखेंगे ये हमें इसको देखना होगा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट ने क्या करना है, ये तो देखिए हम तो यहाँ बैठ के ये बात कर सकते हैं। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपसे कहा, उस पे बात होनी चाहिए। SMEs के यस इश्यूज हैं, फिर वो टैक्सेशन के इश्यूज हैं जो बाद में जाके होते हैं। ये जो मैंने बातें की उसको हमें इनिशियल, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनको इनिशियली देखना चाहिए, ताकि हम किसी जगह पे पहुंच सके। जी मेरे ख्याल से काशिफ साहब का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी, बस मैंने तो अपनी बात कर ली। अगर आप इससे आगे कोई और सवाल करना चाहती हैं तो जरूर पूछिए। जी सर, परहैप्स राउंड 2 में फिर मजीद हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर मैं डॉक्टर शैला की तरफ प्लीज मूव करूं। डॉक्टर शैला, परहैप्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, you have something to add to the discussion regarding the challenges that you are facing and the pharmaceutical sector generally is facing. Madam, in case you're speaking, you're on mute. It's okay? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, I'm Dr. Shehla, Javed, Akram. I'm running pharmaceutical industry, my own, by the name of Don Valley Pharmaceutical, for the last good 26 years. अच्छा, इसमें this is a very good opportunity जो आपने मुझे दी है to talk about pharmaceutical industry. So I would first, पहले तो I would like to just explain to people who are not from pharmaceutical. I would like to tell them कि ये जो pharmaceutical industry के raw materials हैं, ये दो किस्म की होते हैं. There is an active raw material and then there are the excipients जिससे हम उसको तैयार करते हैं. Active raw material इस वक्त they are above like 4,800 or even more than that ये in the world, जिससे हम दवाई बनाते हैं. और ये जो है हमारा जो हमारे APIs हैं वो हमारे 4,800 समथिंग है, लेकिन पाकिस्तान में हम 35 तक पहुंचे हुए हैं. So there is a huge gap between what we need and what we have in Pakistan. एक्सिपिएंट्स तो बात की बात है ना, उसके अंदर जो मिलाते हैं. अब ये जो क्लेमिटी है ना ये वाली, इससे ये होता है कि हम भी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू रन अ कंपनीज. हम 36 से तो कुछ भी नहीं बना सकते ना, जहाँ पे 4,800 एक्सिपिएंट्स हैं तो APIs हैं. उससे एक तो ये प्रॉब्लम आ जाती है
पहला तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये भी होना चाहिए था कि APIs जो है ना उनको प्रमोट करे, उनको फैसिलिटेट करे कि हम इंडिपेंडेंट हो एंड सेल्फ सफिशिएंट हो इन आवर कंट्री फॉर अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे इंडिया है। इंडिया हैज लोड्स ऑफ APIs। जो भी आप नेम OPI अभी बन भी नहीं रहा होता, अभी शुरू होती है दुनिया में दवाई एंड इंडिया मेक्स इट। सो that would explain you the background of pharmaceutical कि हम कहाँ क्यों फंसते हैं। So सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जो ही एक प्रॉब्लम इस तरह की आई, जैसे डॉलर्स की भी आई है, तो हमारा इंपोर्ट ब्लॉक हो जाता है और हमारे पास किसी के पास इतना स्टॉक नहीं होता APIs का कि हम कोई 2-2 साल बैठे रहेंगे। इट इज लाइक अ 3 month स्टॉक, मैक्सिमम 4 month स्टॉक। इससे ज्यादा तो कोई शिपमेंट्स ही नहीं मंगाता, बिकॉज इतने तो APIs होते हैं, तो यू नीड टू स्टोर देम। तो इससे देयर इज अ लिमिटेशन टू हाउ मच वी कैन स्टोर, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो हम 3 months के बाद तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अब दूसरी जो क्लेमिटी है वो ये है कि दवाइयाँ बड़ी इजीली स्मगल हो जाती हैं बिकॉज का वॉल्यूम कम होता है। आप टैबलेट्स है ना, अगर वो डब्बों में से निकाल के ब्लिस्टर स्मगल करे तो उसको इतने बड़े बड़े थैलों में इतने ज्यादा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैक्स आ जाते हैं, तो दे इजी टू स्मगल। और फिर स्मगलिंग हमारी जो है हमारी मार्केट को फर्दर खराब करती है। जो दवाई आपकी स्टॉक में नहीं होगी वो तो दूसरे तीसरे दिन ही स्मगल होकर आ जाती है। दैट इज अनदर थिंग जो जिसकी वजह से फिर हम दोनों तरह पिसते हैं ना हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी वो वाली दवाइयां भी हमारी कंपटीशन में आ जाती हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो विच आर स्मगल्ड। तो हमने जो इसको देखा, दैट इज वाई हमारा ह्यू एंड क्राई बहुत ज्यादा होता है। अब इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो एक गवर्नमेंट का एक हमारे ऊपर एक डंडा आई वुड से, वो ये है कि हमारी सारी दवाइयां प्राइस कंट्रोल में है। वॉट एवर हैपन्स इन पाकिस्तान, डॉलर जहां मर्जी जाए, इंपोर्ट जहां मर्जी जाए, प्राइस हमारी वही, उस पर हम बेच सकते हैं ना। ये भी फिजिबल नहीं होता कि हम उस प्राइस पर उसी प्राइस को मेंटेन कैसे करें। तो हमने बहुत दफा ये भी इनको कहा, ये तो हमारे प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, जिसकी वजह से फिर हम उनको प्रपोजल्स भेजते हैं। तो हमारी प्राइस भी प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है। और बाकी दुनिया में देयर इज ऑलवेज अ लिस्ट, अ स्मॉल लिस्ट, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स। उनकी पूरी दुनिया में एक फिक्स नंबर्स हैं, नेम्स हैं, और उसके ऊपर वो प्राइस गवर्नमेंट फिक्स कर देती है। फाइन, वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन बाकी को तो खुला छोड़ दे ना, ताकि हम भी तो लेवल प्ले फील्ड हो ना हमारा, कि हम उनको अपने हमने देखे। और दूसरी बात ये कि छोड़ भी देगी तो होना कुछ नहीं, बिकॉज हमने भी तो मार्केट में बेचना है। वी कांट गो स्काई हाई एंड सेल इट। वो तो ऑटो कंपटीशन शुरू हो जाती है विद अदर कंपेटिटर्स जो हमारे बाकी फार्मास्यूटिकल के हैं। तो ये प्राइस कंट्रोल खुद ही हम लोग कर लेते हैं, बट एटलीस्ट वी हैव द फ्रीडम। अभी तो फ्रीडम ही नहीं है। तो अब हमें ये हुआ है कि हम जो हमारे जो प्रपोजल्स हैं वो ये हैं कि फार्मास्यूटिकल प्राइसेस को डीरेगुलेट करें, उसकी वो वही लिस्ट बनाएं जो दुनिया में बनी हुई है। व्हाई शुड वी हैव ठप्पा ऑन एवरी और डंडा ऑन एवरी प्रोडक्ट के जी हम इसकी प्राइस नहीं बढ़ा सकते। और उसमें जो है ना ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसकी ये बैकबोन है ऑफ एक्सपोर्ट। हम बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना। ये बैकबोन है ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ US एंड इंडिया। दे आर द बिगेस्ट मनी मेकर्स। वेरी बैकबोन कंट्री की बनी होती है। अब टॉक ऑफ द बिग मल्टीनेशनल्स, वो सपोर्ट करती हैं US को और सपोर्ट करती हैं इंडिया को, इसलिए कि उन्होंने इसके लिए एक अलग काउंसिल बना दी, एक्सपोर्ट काउंसिल, ताकि वो इनके हमारे प्रॉब्लम्स ही फर्क है ना फार्मास्यूटिकल के। तो वो एक काउंसिल बना दी जिसको एक्सपोर्ट काउंसिल कहते हैं, फार्मेक्सिल उसका नाम है इंडिया में। और ये जो काउंसिल बनती है क्यों बनती हैं? इसलिए कि ये 1 to 1 आपके साथ आपके प्रॉब्लम को समझे और आपको इंपोर्ट बढ़ाए, एक्सपोर्ट बढ़ाए, विच इज एक्चुअली एवरी कंट्रीज डिमांड एक्सपोर्ट बढ़े। अब हमारे यहाँ क्या होता है, क्यों हम कहते हैं कि जी ये अलग बने फार्मेक्सिल, बिकॉज हमारी कोई फार्मास्यूटिकल काउंसिल बने, एक्सपोर्ट काउंसिल, बिकॉज हमारा हर प्रोडक्ट ने पहले उस कंट्री में रजिस्टर होना है, हर प्रोडक्ट ने वहां जाके टेस्ट होना है, उसकी लैब अलग चाहिए। मतलब देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, तब जाकर और एक प्रोडक्ट पे लाखों डॉलर्स लग जाते हैं बिफोर वी कैन टेक द प्रोडक्ट इन द मार्केट इन एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो इसके लिए जो काउंसिल्स हैं दे अंडरस्टैंड इट, विजिलेंट एंड इट्स नॉट दैट। सो वन हमारी डिमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि हमारी एक्सपोर्ट हैंडलिंग हमारी काउंसिल करे, एक काउंसिल बनाए, एक्सपोर्ट काउंसिल।
सेकेंडली डीरेगुलराइज करें हमारी फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग को और लिस्ट छोटी करें, अपनी लिस्ट बनाएं एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जिसके ऊपर आप बेशर्त प्राइस कंट्रोल करें, जरूर करें आप। तीसरा ये है कि ड्रैप जो है, जो हमारा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, जिसका बेस्ड है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बट उसको ओवरलोड कर दिया गवर्नमेंट ने, हर चीज से ओवरलोड कर दिया है। उसके मैंडेट को इस तरह बनाए कि वो हमें डेवलप भी करे, उसको ओवर इस तरह कर दिया है। अब उसके पास इतने पोर्टफोलियोज खोल दिए हैं उसको कि वो उनके और बंदे उनके पास, हर गवर्नमेंट के दायरे को ये प्रॉब्लम है जी, हमारे पास बंदे कम है। हम ये कहेंगे उसको फोकस करें दोबारा जैसे पहले था, फोकस करें उसको, क्वालिटी ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स को फोकस करें और प्रोसेसेस ऑफ फार्मा इंडस्ट्री पे फोकस करें, उसका थोड़ा मैंडेट मुख्तसर करें ताकि हम फार्मा वो मिल के, वो भी हमारा एक पार्ट एंड पार्सल है ड्रैप, वो भी हम मिल के हम अपनी फार्मा को डेवलप करें। उसको इतना ज्यादा पोर्टफोलियो दे दिया है कि वो उनके पास टाइम ही नहीं होता टू अटेंड टू ऑल दैट। और हमारे मसले, फिर हमारी लाइनें लगी होती हैं प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की, हमारी लाइनें लगी होती हैं, इतना ज्यादा क्यों अडाप्ट है हमारे प्रोडक्ट्स विच गो इनटू द रजिस्ट्रेशन। बाय द टाइम some of the companies get the registration, believe me, दूसरी कंट्रीज में वो 3-3 साल से चल रहा होता है, मतलब ये so much behind। तो ये चीजें तभी होंगी ना जब हम उनको फोकस कराएंगे और इसको प्रायोरिटाइज करेंगे कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो इतना क्यों आप तो ना करें कि अब 2-2 साल का क्यों लगा होता है, और जब तक बनेगा हम 3 साल हो जाएंगे। जब 3 साल हो जाएंगे दूसरे मुल्क तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और हम लोग अभी पुराने प्रोडक्ट को लेके अब कंट्री में लॉन्च कर रहे होते हैं, और जब दूसरी कंट्रीज हमारा तो मजाक ही बन जाता है ना, दूसरी कंट्रीज 3-3 साल से बेच रही है, हम कहते हैं जी हमने भी लॉन्च किया है। सो देयर हैज टू बी सम बैलेंसिंग बिटवीन द कंट्रीज कि जी जब हम वो करें तो हम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा ये था कि सप्लाई चेन की तो मैंने बात कर ली आपके साथ, तो सप्लाई चेन के इफेक्ट्स आपको सबको पता है, जैसे काशिफ साहब भी बता रहे थे, किसी की भी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन कम होगी तो ज़ाहिर है डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब और डायरेक्टली वो कंपनी बंद हो जाएगी। इस वक्त तक द बैड न्यूज इज कि हमारी 25% से ऊपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो चुकी हुई है, और स्मगलिंग हमारी हाइप होती जा रही है ऑफ द प्रोडक्ट्स। जाहिर है जो बंद होगा उनके प्रोडक्ट्स तो स्मगल होंगे ना, पीपल आर टेकिंग दोज प्रोडक्ट्स। सो ये है मेरी कुछ पॉइंट्स जो मैंने गुजारिश करने थे, विच आर लिटिल डिफरेंट टू द नॉर्मल, टू अदर स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज। Thank you very much, Dr. Shehla. Your points are very well noted, Ji. Moving on, I'd like to invite Mr. Anis Khwaja next. Sir, as a director of Mahmood Group of Industries, your industry basically covers a lot of different sectors, including agriculture and then textile, and of course, your contribution to the startup ecosystem as well. So, sir, perhaps as director of your organization, you could please let us know what are the several challenges that you are currently facing in the economic turmoil. Thank you, Mahnoor, and thank you to my very good friend, Dr. Saab, for setting this up. Such things are platforms where we're able to sort of not just communicate our concerns out, but also vent out, because we feel like we are being heard by various people across the different platforms, and a lot of apprehensions which are there about us are clarified. Again, thank you for the introduction. I would want to start off with the fact that I was yesterday in Dubai at a startup conference by the name of Park Launch. And let me start with the positive note that I feel that as talent, Pakistan is nothing short. It was a predominantly Pakistan-based tech ecosystem, startup ecosystem, and the kind of minds which were there was just brilliant on its own. And we need to take pride in it, but we also need to see the gaps in it where we feel that there is a massive disconnect coming around now, where the new youth, the generation which is coming in, is very far away. As you know, I belong to the south of Punjab from the city of Multan. Here, the reality is probably a bit more far away than where it is in the more developed cities. So I think as a nation, and through the platform of SDPI, and I know Dr. Saab and myself, we are already working on this model for quite some time, that we need to inline
these cities which are lesser developed in the country, because ultimately our backbone as well as our strong point is our population, our youth. And to make the most of it, we now need to make sure that they are connected to the reality. So I wanted to start up with startups, because when we talk about startup and when we talk about technology, we're actually covering each and every sector. Now look at my textile sector. And in my textile sector today, those companies are seeing a future. Those companies are seeing uh, themselves progressing into the international world, because as you know, the textile sector is the largest exporter out of Pakistan as well, with 70% of its share. We are now heavily dependent upon IoTs, AI, as well as the data, because iski basis pe we will only be able to decide and place ourselves of what and how we need to progress into the future and compete with the rest of the world. तो उस टेक्नोलॉजी, उस डेटा की बेसिस पे, and for all of that to happen, we cannot rely on our old education system where there is a complete disconnect of where we are and where the world is. So as industrialists, as a development institute, as chambers, I think it is our utmost responsibility that we make an effort to bring this gap closer and bring the realities catching up with what is actually happening in the rest of the world. Similarly, some of the other businesses that we are in, I mean, textile is a huge chain. तो उसमें ना सिर्फ digitalization की बात होती है, जिसमें हम industry 4.0 की बात करते हैं, उसके साथ हम sustainability को बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं. तो ये sustainability ये है कि जो हमारे products हैं textile के, जिसमें पानी की consumption है, chemicals की consumption है, recycling of water है, हमारी building LEED certified होनी चाहिए, solar energy है, because textile itself is unfortunately a high energy consumption business as well. So we need to stay very focused on renewable energies, and we also need to start working on the level of renewable recycling we can do, not just in terms of some of the basic natural facilities that we have of water, but also in terms of the fiber itself that we use. So a huge concept of circular economy and recycling of garments as well as different polyesters are being done. So as a company, now we are investing into recycling of PET bottles, so that those PET bottles which are wasted in dustbins are not just put into landfills, but they're used to recycle and create a fiber again, which can then be consumed to produce a garment. So such ideas are something which really need to come on board. But again, my concern today revolves around the fact that we need all of this to be coming out of the right HR training and the right HR that we need in Pakistan. On a similar note, something which is very close to my heart is agri. And as you know that I'm from Multan in the south of Punjab, agri becomes a part and parcel for us. Not just for the fact that, you know, I feel that there is huge potential in it, but also for the fact that a lot of livelihoods in Pakistan are dependent on it. So again, as businesses, as entrepreneurs, our job is, which we, alhamdulillah, as a company, as a group, we are doing that. We are trying out different products now in different way, and we're just making sure that there is some sort of value that can be added out of that. So dried stuff, processed stuff is kind of elements which are there. A lot of technology is again needed for this, but with that, a lot of government support is also needed to bring in the right kind of machinery, to bring in the right kind of people, the consultants, to make sure that the right efficiencies are created. And unfortunately, the farmer sector that we have, which is not very educated, also gets a lot of understanding into what is actually the process of handling all such businesses. So agri is pretty big. Agri is huge. Agri's got the opportunity of taking our country out of the glut we are in. But for this, a lot of government support is needed. And unfortunately, I have at least not seen that happening or coming around in the last 5 years. Precisely, I mean, not even before that, but just maybe for 6 months in the last few years was a time where I was very hopeful. So again, I would request this platform of SDPI to really look into the fact that how we can actually
improve on this, and we can see that how this is something which can get better as well. So just to close it up, a couple of other businesses that we do that is into export of poultry eggs, that is into export of leather as well. The challenges are very common. I was just fortunately on another platform an hour ago with Mr. S. Iqbal. We were working on how we can increase exports. I've been a part of the board of Pakistan Single Window, a fantastic platform, I believe, which is bringing in a lot of ease of business. I've been on the board of EDF, which is Export Development Fund. I feel it still needs a lot of work, but it is on the right track. So a lot of good things are happening. I've been involved with the Punjab industrial states as well. The states coming in are going to be much better than what we've had before. But I think the problem is that as businesses, what we hope is whether we call it supply chain, जिस तरह काशिफ साहब ने बात की है, डॉक्टर शैला ने अपनी इंडस्ट्री के challenges बताए हैं. But the issue is that we need visibility, we need certainty. हमें एक जब ऑब्जेक्टिव दिया जाए, हमें बताया जाए कि this is what we are expecting from you, कि आपने अपनी एक्सपोर्ट्स की इस तरह ग्रोथ करनी है, and this is what we are offering you, और इसकी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें और अपने आप को ग्रो करें. बट अगर 3 महीने बाद, be it an external financer who has to come in and dictate our terms, the whole policy gets thrown out of the window. Unfortunately, that does not help the cause, not just in terms of the investments which have been done, but also for the fact that in future, such investments will never happen. The trust is broken. So visibility and continuity of the policy is key, whatever that policy is, but there should be one, and it should be taken as a Bible, that this is what is there and this is how it will always stay. For no matter what kind of a government comes in, no matter what kind of a financer comes in, or what kind of a support comes in for the government of Pakistan. So with that, I would just want to close my thought process here, my talk here. I hope I've covered all the sectors that I was hoping to. And once again, thank you SDPI for this fantastic event. I know it's difficult to always pull in different kind of people, but you always do a fantastic job. And thank you for having me here today as well. Thank you very much, Anis Saab, and very generous of you to be saying that about SDPI. Moving forward, I'd like to invite Rehan Bharara Saab next. Sir, as the chairman of Faisalabad Garment City, perhaps you can shed light on the several challenges that have been faced by the textile sector, which is also one of the sectors most badly hit in the current time. So over to you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all participants, or especially nice to see Dr. Vaqar after a long time, or Kashif bhai, Anis bhai, or Dr. Shehla. Especially I remember I have a panel discussion, I think 15 or 16 years back with Anis bhai, maybe you remember or not. But I remember one of his words, which I want to share with this esteemed people, that he said at that time, 15 years back, I think, that the bank loans who are getting more than 1 billion, there will be a problem in the bank. And if किसी ने अगर लोन लिया है करब से कम, तो वो पार्टी गई. Otherwise, 1 बिलियन से जो ऊपर है वो बैंक गया. तो मुझे आज भी उनके वो वर्ड्स याद है. तो आज हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि 15 साल बाद हम वो बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं. अभी काशिफ भाई ने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस दिया, डॉक्टर शैला ने अपनी इंडस्ट्री का बताया, अनीस इज ऑफ द सेम इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं सब लोग, वो सबको पता है. इवन गवर्नमेंट नोज बेटर देन अस, बट अगेन वही शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए बार बार. ये आपने जिस तरह ऑर्गेनाइज किया है, तो आई थिंक वी शुड आल्सो एक जैसा रिकॉल हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम जिस टाइम इंडस्ट्री फेस कर रही है. देखें, अभी आपने आज ही पता लगा कि हमारा जो सेल्स टैक्स रिफंड, जो रिफंड्स नहीं आ रहे हैं, तो पता लगा है कि जो हमारा FBR का सिस्टम है वो ही क्लैप्स कर गया. एंड इट विल टेक, डोंट नो व्हेन इट विल बी रिवाइव्ड. इट टेक 8 days और 10 days. पहले ही हम शॉर्ट चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है इस कंट्री के अंदर, एवरीबॉडी नोज दैट. जब उसके बाद अभी जो बात सारे कर रहे थे काशिफ भाई भी, कि पाकिस्तान का एक IMF के साथ व्हाटसएवर एक गुड न्यूज तो है कि IMF का आ रहा है डेलीगेशन पाकिस्तान में. बट अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जब हम एक्सचेंज रेट को बड़ा ओपन छोड़ देते हैं, जिस तरह 2 दिनों के अंदर अराउंड 42 to 45 रुपीज के करीब हमारी
जो PKR है डिवैल्यू हो गई है, और हमें भी ये नहीं पता कि वेयर इट विल गो मोर, either it remain stable here or it go up to 300. Nobody knows, because आज भी मेरी सुबह बैंक से बात हो रही थी, तो they are not even offering to clear the import document at 270. तो 270 रुपए में भी अगर वो नहीं क्लियर कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा मैं इशू समझता हूँ कि हमारे लिए है। अच्छा, इसी के साथ जैसे बात अभी की कि हमारे साथ क्या एक पॉलिसी, हम क्यों एक कंटिन्यूस पॉलिसी पे क्यों नहीं आते। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा जो इशू ये है कि हम डिवैल्यू करके समझ रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे और उसके साथ साथ हम बैंक मार्कअप्स बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे। दैट इज इम्पॉसिबल फॉर अवर कंट्री। देखिए, ऑलरेडी इतना इन्फ्लेशन हाई है, इसका मार्कअप बिल्कुल काशिफ भाई ने सही कहा कि ये एक्सपेक्टेड है कि मे बी इट गोज अप टू 20%, मोर देन 20%, इट कैन बी हैपन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वेयर विल स्टैंड। अच्छा, अब एक्चुअली तो होना चाहिए कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल इंपोर्ट बात बिल्कुल दुरुस्त है, इंपोर्ट हमें रोकनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका जो इनपुट है दैट इज अराउंड 70% जो हम इंपोर्ट करते हैं और फिर हम उसको फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली तो हमारा रेशियो 30% के करीब है। तो हम कभी भी जिस लेवल पे, जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम चल रहे हैं, हम कभी भी, मैं नहीं समझता कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा पाएंगे और इंपोर्ट को लोग डिक्रीज कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमने अपने अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं कर देंगे, जब तक वो वाली इंडस्ट्री नहीं लगेगी। अब उस इंडस्ट्री का लगाने का क्या प्रोसीजर है? मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी, बिल्कुल अनीस भाई ने सही कहा, कोई कंटिन्यूस पॉलिसी नहीं है, नहीं आती है गवर्नमेंट, पॉलिसी चेंज हो जाती है। जैसे पीछे हमारी एक एनर्जी कॉस्ट की चल रही थी पिछली गवर्नमेंट के अंदर, 6 सेंट्स पे और 6 पॉइंट बिजली चल रही थी और $6.5 पे हमारा MMBTU गैस चल रही थी। अब देखें ना, 28% के करीब उन्होंने गैस इंक्रीज की। ठीक है, अभी भी सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, बट देखें ना, उससे कॉस्ट इंपैक्ट पड़ गया, 28% आपका इसी गैस बढ़ गई, इसी तरह ऑलमोस्ट बिजली बढ़ गई। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, अभी जिस तरह अभी बात करते हैं, एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ हमारे यहाँ, सैलाब आया, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर बिल्कुल तबाह उस साइड का हो गया जहाँ जहाँ से सैलाब गुजरा। अब आज हमें कॉटन नहीं है हमारे पास, अनीस भाई नो वेल, चूंकि बिलोंग्स टू टेक्सटाइल। प्रॉब्लम ये है कि हम फिर आज इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए भी डॉलर्स चाहिए। अब हमारे पास डॉलर्स नहीं है, इंपोर्ट हो नहीं रही है। अच्छा, अब इंपोर्ट नहीं होगी तो हमारी एक्सपोर्ट कैसे होगी? जैसे मैंने बताया कि 70% ऑलरेडी उसको करते हैं अपने, कि हमारी सारा करता ही उसके ऊपर है, हमारा सारा इंपोर्ट के ऊपर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब तक हम, जैसे पहले बात हुई कि जब तक हम अपना इन हाउस घर दुरुस्त नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज ठीक नहीं कर पाते। मुझे तो जो सारी फीलिंग आ रही है, देखिए ना, आप कॉटन इंपोर्ट करनी है, गंदुम हमारे पास शॉर्ट है, गंदुम इंपोर्ट करेंगे, कल को राइस शॉर्ट हो जाएगा तो राइस इंपोर्ट करेंगे। इन सारी चीजों के बाद सारा प्रेशर ऑलरेडी डॉलर के ऊपर है, फिर इंपोर्ट कंट्री बन के फिर इंपोर्ट बढ़ जाएगी। जितना मर्जी हमने रोक लिया, जिस तरह बात हुई। अब गारमेंट के वाले से बात करें, हमारे बहुत सारे दोस्तों की शिपमेंट्स रुकी पड़ी है, किसी का इलास्टिक नहीं आ रहा, किसी की जिप नहीं आ रही, किसी का बैग नहीं आ रहा, किसी का लेबल नहीं आ रहा। छोटी छोटी शिपमेंट्स हैं, गवर्नमेंट क्यों रोक रही है, हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही। जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे फील होता है कि शायद हमें, जो हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, वो जब तक स्टेक होल्डर्स को, वो मुझे नहीं समझ क्यों स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हमें बताते। आज देखिए, जिस दिन हमने, गवर्नमेंट ने और हम सब ने सच बोलना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट भी सच बोले हमारे साथ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, जब तक मिलके स्टेक होल्डर्स बैठेंगे नहीं, हमारे मुल्क का सलूशन ये नहीं है कि हम दुनिया से मांग के अपने डॉलर पूरे करें और फिर हम उसको अपनी अयाशियों में या उन लग्जरियस आइटम्स में उनको इंपोर्ट करके, जिस तरह भी चंद दिन पहले चल रहा था, पता नहीं सच या झूठ था, कि कितने 100 गाड़ी हमने इंपोर्ट कर लिया लग्जरी आइटम में। इसी तरह हमारी बहुत सारी लग्जरी आइटम इंपोर्ट हो रही है। शैम्पूज हैं, क्या उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता? चॉकलेट्स हैं, क्या उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता? हमें फोकस ये करना है कि हम सिर्फ उन इंपोर्ट्स को अलाउ करें जिनकी जो रॉ मटेरियल्स हमारी ये जरूरत है। अगर हम उन लग्जरी आइटम्स पे अपने डॉलर जाया कर देंगे, अपनी, उसको मैं अयाशी कहना चाहिए, उस अयाशी पे अगर हम अपने डॉलर लुटा देंगे, पहले मुल्क क्राइसिस के अंदर है। अच्छा, उसके बाद जो भी अपना, मैं बिल्कुल काशिफ भाई की बात से एग्री करता हूं कि एक बार हम सबको, गवर्नमेंट को चाहिए बैठे विद ऑल स्टेक होल्डर्स, ना सिर्फ बिजनेसमैन, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज, ऑल हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कोई भी है, PTI है, PMLN है, PPP है, एवरीबॉडी शुड सिट टुगेदर। मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज हो,
हम सब मिलकर बैठे, जितने स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर बैठे, अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन तभी आएगा। नहीं तो कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी वो उसको फिर पॉलिसी को टर्न डाउन कर देती है, क्योंकि वो ये समझते हैं अगर कोई पॉलिसी किसी की अच्छी है तो उसको टर्न डाउन करने से उसकी गुडविल रहेगी, तो अपनी गुडविल बनाने के लिए अपनी पॉलिसी ले आते हैं। तो हमें देखें, जब तक हम कोई 20 या 25 साल की अपनी कोई कंटिन्यूस पॉलिसी नहीं लाएंगे, हम इसी तरह इस वो उस घन चक्कर में ही चलते जाएंगे, कभी उधर और इसी तरह हम पिसते जाएंगे। इसके साथ जो भी काशिफ भाई बात कर रहे थे कि हमें डॉलर के ऊपर भी एमनेस्टी देनी चाहिए। एवरीबॉडी नो, देखे ना इस टाइम भी मुल्क के अंदर 3 रेट्स चल रहे हैं। एक इंटरबैंक रेट है, बेशक आज डिवैल्यू हो गया, उसके बावजूद आज के दिन भी 3 रेट है। एक इंटरबैंक रेट है और एक ओपन मार्केट का रेट है। लेकिन जो असल डॉलर का रेट चल रहा है वो ब्लैक मार्केट का रेट है। आपके सामने है कि गवर्नमेंट ने भी पीछे कहा कि अगर आपने अपनी इंपोर्ट्स के क्लियर कंटेनर्स करने हैं तो आप मार्केट बाहर से थर्ड कंट्री से या थर्ड वन किसी भी जगह से पैसे कराएं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ असल डॉलर का रेट हुआ है जो ब्लैक मार्केट का रेट है। ये डॉलर का रेट तो है ही नहीं, ठीक है, गैप अब कम मैं समझता हो जाएगा, जो 30-40 दिन की अच्छा इकदाम किया है इस लिहाज से। लेकिन जब तक आप डॉलर को या तो ओपन कर दें, अभी भी ओपन मार्केट पे एक इन्होंने रिस्ट्रिक्शन की है कि 1900 या 2000 डॉलर से शायद ऊपर जाएंगे तो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होगी। जब तक ये वाला मामला हम खत्म नहीं करेंगे तो हमारा, मैं नहीं समझता कि डॉलर की लोगों के पास इनपुट आएगी। एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल देनी चाहिए, वन टाइम दे, डॉलर के ऊपर एमनेस्टी स्कीम दे ताकि लोग अपने डॉलर लाएं, अकाउंट्स में रखें और उनको ये गारंटी दी जाए कि उनके कल को डॉलर होल्ड नहीं होंगे। लोग डरे हुए हैं कि कल को, जब आपको याद होगा 98 के अंदर ये सेम सिचुएशन हुई थी जब मुल्क जब हमने एटॉमिक बॉम्ब का धमाका किया था, तो उस वक्त भी शायद इन्हीं की गवर्नमेंट थी और हमने डॉलर फ्रीज कर दिया तो पाक रोबेज में। तो लोग स्टिल डरे हुए हैं कि क्या हम अगर अकाउंट्स में लाएंगे, हमें उनको एक कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप अकाउंट्स में पैसे रखें, उनके डॉलर अकाउंट में रखें, उनको डॉलर में रिटर्न करें। लेकिन एक बार हमें रिजर्व बिल्ड करने की जरूरत है। इस टाइम पाकिस्तान के पास तो शायद 15 दिन के भी इंपोर्ट के पैसे नहीं रह गए जो इस टाइम पोजीशन है। अल्लाह करे IMF आए, बाकियों से भी आए, लेकिन क्या हम मांग के सारी उम्र चलेंगे? क्या हमने अपने मुल्क को तरक्की नहीं देनी? क्या हमने अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं लानी? हम मिसालें देते थे हमारे हमसाया मुल्क की कि वो जी वो क्राइसिस चला गया, फलां हो गया, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। उनके रिजर्व पेंडेमिक के बाद तकरीबन 700 बिलियन डॉलर पे चले गए और हम आज शायद वो भी रिजर्व में, उस पे वो भी मांगे तांगे के रिजर्व हैं। तो वी हैव टू चेक ऑन दिस। अच्छा, इसके बाद जो अभी बाकी आगे सेकंड ऑप्शन में भी हम उस पर बात करेंगे कि इसके और क्या होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है, अब हाईएस्ट मार्कअप रेट पे मुझे बताएं कौन इस टाइम इंडस्ट्री लगाएगा, कौन बिजनेस में पैसे डालेगा। मुझे एक इजी मनी आ रही है, मेरे पास फालतू पैसे पड़े हैं, मैं बजाय इंडस्ट्री लगाने के मैं 18 या 17% पे बैंक मुझे मार्कअप दे रहा है सेफ, मैं आराम से घर बैठूं, मजे करूं, एंजॉय करूं अपनी लाइफ और मुझे पैसे आ रहे हैं। मुझे इतना सर दर्द लेने की क्या जरूरत है कि मैं इंडस्ट्री बंद करके बेच के अपने पैसे, मुझको चाहिए किस पे लगा, बैंक पे रखने चाहिए। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता इकोनॉमिकली। सो दिस व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन दिस, वी हैव टू चेंज अवर प्रायोरिटीज। उसके साथ साथ ये तो गवर्नमेंट के हम देख रहे हैं कि क्या चीजें, उसके साथ साथ हम खुद एज ए नेशन हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब देखिए कि हमें सबको पता है, पूरी अवाम को, 22 करोड़ या 23 करोड़ अवाम को पता है कि मुल्क इस टाइम शदीद क्राइसिस में है। क्या हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया? आज भी मैं देखता हूँ रात 12-12 बजे तक हमारी मार्केट्स खुली हैं। क्यों? पूरी दुनिया जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क है, यूरोप वगैरह में तो 6 बजे मार्केट्स बंद होती है। हम अपने नेबर कंट्री की बात करते हैं इंडिया की, वहां पर भी 8 बजे मार्केट्स बंद हो जाती है। चले 8 नहीं, हम 9 बजे बंद कर दें, लेकिन हम वो करने को तैयार नहीं है। सुबह अर्ली कर लें। हम इस्लाम का नाम लेते हैं कि हम एक इस्लामिक मुल्क है, अल्लाह का शुक्र है हम सब मुसलमान हैं। तो इस्लाम ने तो हमें हुक्म दिया है कि अर्ली अपने अपने कारोबार पे जाएं और मगरिब तक अपने कारोबार को क्लोज कर दें। क्या हम ये नहीं बता सकते अवाम को, क्या हमारे मुफ्ती साहिबान, हमारे उलमा कराम, कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है? हम अपने मुल्क की हर चीज अपनी जाती याशी के अंदर मुल्क को खत्म कर रहे हैं। रात 12 बजे तक आज के दिन में एवरीबॉडी, हर बंदा कह रहा है कि इस मुल्क के अंदर क्राइसिस है, रिसेशन है, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं, और सच है आटा नहीं मिल रहा। बिजली के बिल भरें या आटा लें या अपने कोई कपड़े खरीदें या कोई जरूरियाती जिंदगी खरीदें, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा प्राइसेस आई होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने आप को फिर भी सही करने को तैयार नहीं है। अगर हम ऑफिस से निकल के 6 बजे और आपके पास 9 बजे तक का टाइम है तो कर सकते हैं। हम वो जो 12-1 बजे तक की मार्केट्स खोलते हैं, हम अपना बिजली के रिजर्व जाया कर रहे हैं, तेल पहले हमारे पास नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर देखें, हम जो मर्जी के, पाकिस्तान अल्लाह ना करे कभी मौका आए, लेकिन पाकिस्तान सर इस टाइम डिफॉल्ट की पोजीशन पे है। हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। ये हमें कब समझ आएगी? ना गवर्नमेंट को समझ आ रही है, ना हमारे प्राइवेट लोगों को समझ आ रही है कि हम कब ठीक करेंगे।
इसी तरह मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ अपने तमाम बाकी मौजूद मेंबर से कि आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने कहा देखें हम बिल्कुल सही आप बातें करते हैं ये सारी कि ये होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट की साइड से उन्होंने अपने को खर्चे कम किए? क्या उनके प्रोटोकॉल्स में कोई कमी आई? क्या उन्होंने कोई पाकिस्तान, अगर देखें उनसे ज्यादा गवर्नमेंट से ज्यादा किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, फाइनेंस की क्या है, क्या उन्होंने फाइनेंशियल कट डाउन किया? बातें करने से तो नहीं है ना, जाहिरी तौर पे अभी यहाँ कोई मिनिस्टर साहब जा रहे होंगे या कोई हमारे डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जा रहे होंगे, 4-4 5 गाड़ी उनके साथ प्रोटोकॉल की चल रही हैं, तो क्या हमने कोई चेंजेस किए हैं? ये हम कब चेंज करेंगे? दिस इज अनफॉर्चुनेट है। हमने अब इतना तबाही के ध्यान पे आगे बात हो रही थी बांग्लादेश, जो हमसे जिनको कहते थे कि एक वक्त हमें कहा जाता था कि जी वो टके की बात होती थी, आज तो हमारी पोजीशन ये है कि 3.5 रुपए का 1 टका हो गया। तो अगर हम उनसे भी पीछे चले गए हैं जिनको हम उस वक्त कहते थे कि हम पे शायद बोझ है, तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला दैट्स एंड फ्रॉम माय साइड। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा था कि सेकंड फेज में हम बात करेंगे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी रेहान साहब, आपके पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं और बिल्कुल ये सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ आपके नेशनल लेवल पे नहीं लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी हैं जी, बिल्कुल। मूविंग फॉरवर्ड, मैं राउंड 2 पे अब आना चाहूंगी फॉर द रिकमेंडेशंस पार्ट ऑफ आवर सेशन। काशिफ साहब, perhaps I can start with you. As we all know कि अनकरीब ये जो हमारे मसाइल चल रहे हैं इकोनॉमी के, ये हमें हल होते नजर तो नहीं आते, पर वही बात है कि हम प्लेजेस और IMF वगैरह के सहारे के लिए बहुत इस वक्त डिपेंडेंट है उनके ऊपर। लेकिन सर फिर भी with regards to everything in mind, keeping everything in mind, what would be your recommendations for as part of the business community, what are your recommendations for the forthcoming mini budget and then the federal budget as well, which are both quite near? देखें, it is very important कि we have to expand our tax base, और वो जब तक हमारा tax base नहीं expand होगा तब तक उन्हीं पे प्रेशर्स आता रहेगा जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि फैसिलिटेट द एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स और विद होल्डिंग के रेट्स को कम करें, टैक्स बेस को बढ़ाएं, टैक्स बेस को बढ़ाकर रेवेन्यू कलेक्ट करें, विद होल्डिंग्स को बढ़ाकर रेवेन्यू कलेक्ट ना करें, क्योंकि जब आपका विद होल्डिंग ज्यादा हो जाती है तो अल्टीमेटली इतने ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है कि आप इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर पहले बैंक से पैसे लेते हो, फिर आप सरकार को दे देते हो, फिर रिफंड्स के लिए चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, फिर रिफंड्स लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो वो ताकि आपके जो रिफंड्स हैं वो कम से कम जाएं। उसके बाद हमें ये बताना होगा अपनी जो बजट की आपने बात की है उसमें टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटीज के इख्तियारात को कम करना होगा। हम जो टैक्स पेयर्स हैं हमेशा उसी को स्क्वीज करते रहते हैं, हम उसी पे रेट एंड नंबर ऑफ टैक्सेस को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर की सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। जब तक आप टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी को अकाउंटेबल नहीं करेंगे कि उसकी कितनी अपील्स जो हैं वो हायर कोर्ट से चाह के रिवर्ट बैक हो गई और उसको दोबारा रीडिटर्मिन करने को कहा गया, तब तक आपका करप्शन भी खत्म नहीं होगा। इसलिए मेक अकाउंटेबल द टैक्स कलेक्टर्स, ताकि वो अकाउंटेबल हों। अब जहां तक ये बात है कि हम अपने ऐसे आपके रॉ मटेरियल्स हैं जो आपके मुल्क के अंदर नहीं बनते, we have to revisit their duties, उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज लगी होती हैं, उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज ज्यादा हैं। तो जो ऐसे आपकी ऐसे रॉ मटेरियल्स जो आपके मुल्क के अंदर नहीं बनते, आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना चाहिए है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एज अ हेड ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे यहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर्स हैं तो रिटेलर्स के भी हैं, तो उन दोनों के इंटरेस्ट आपस में क्लैश करते हैं। तो हम दोनों को एक पेज पे बैठाना चाहिए। और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसल्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी। वी नॉर्मली अनाउंस द पॉलिसी फर्स्ट एंड देन स्टार्ट कंसल्टेशन। we have to sit at the table, we have to consult the stakeholders first and then announce the policy. रिटेलर्स की चूंकि बात हो रही है, मेरा उनसे भी ताल्लुक है,
तो मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूंगा कि हमने टीयर 1 की बात की है, हम टीयर 1 रिटेलर्स को हर साल बढ़ा देते हैं उसकी लिस्ट को, तो सेल्स का एरिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वी हैव टू डिटरमिन, वी हैव टू री एग्जामिन द लिस्ट ऑफ द टीयर 1 रिटेलर्स। और देखें हमें वहां पर भी जो हमने उसमें शराइत रखी हैं, हमने कि नॉर्मली देखें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, इट शुड बी सिंगल पेज, इट शुड बी इजी। करना जो काम है वो कानून को इम्प्लीमेंट करवाना एफबीआर का काम है, हमारा काम नहीं है कि हम कानून को इम्प्लीमेंट कराएं। किसने गाड़ी खरीदी, किसने बेची, किसने प्रॉपर्टी खरीदी, किसने प्लॉट बेचा, किसका कैपिटल आया, किसका एसेट गया, ये सारा कानून का, ये एफबीआर का काम है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराए। लेकिन कानून जो है वो हम ही टैक्स पेयर्स को ज्यादा हमें विदहोल्डिंग एजेंट बना देता है, हमें ड्यूटी असाइन कर देता है कि आप अपनी सेल्स के साथ उनसे एडवांस टैक्स डिडक्ट करें। तो देखिए जब तक ये आप पॉलिसीज को बेहतर नहीं करेंगे और जब तक आप अपना टैक्स बेस एनहांस नहीं करेंगे, और हमें अगर हम समझते हैं कि इस वक्त इमरजेंसी है, आप अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, हम इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करना चाहिए। और हमें अगर इमरजेंसी सिर्फ आवाम के लिए है तो स्टेट के लिए भी इमरजेंसी होनी चाहिए, स्टेट की सब्सिडीज को भी रिड्यूस होना चाहिए। हमारी जो असेंबलीज हैं जिनके लोगों को हम ही ने यहाँ से इलेक्ट करके भेजा है, डॉक्टर वकार साहब आपके लिए भी है कि उनकी आवाज उठाएं कि उनकी पेज को बंद करवाएं, ताकि हम ऐसे उन एक्सपेंडिचर्स को कम करें जिन एक्सपेंडिचर्स को हम कम करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो नुकसान में जा रही हैं, व्हाई वी आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स मनी ऑन दोज व्हिच आर contributing zero in the exchequer, and we are paying a lot to their employees and they are contributing nothing. हमें उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के मुतालिक सोचना होगा। अब देखें, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को चला सकें, उनके मुलाजमीन को अगर आपने करना है उनको प्राइवेटाइज तो जरूर प्राइवेटाइज करें। देखें जॉब्स तो अगर हम इस बात से डरते हैं कि हमारी जॉब्स चली जाएंगी, तो जॉब्स तो अभी कोविड में भी चली गई, जॉब्स तो फ्लड में भी चली गई, जॉब्स तो अब भी जा रही हैं। तो ये गवर्नमेंट को ऐसे फैसले करने होंगे जब तक हम ऐसे व्हाइट एलिफेंट्स को नहीं यहाँ से निकालेंगे। लेकिन यही पैसा आपके ऊपर आना चाहिए। आप चूंकि बजट की बात कर रही हैं, तो हमारा जो पैसा है उसको आपके हेल्थ पे लगना चाहिए, आपके एजुकेशन के ऊपर लगना चाहिए। नंबर ऑफ प्रपोजल्स विच वी कैन गिव, लेकिन ये मोटी मोटी प्रपोजल्स हैं। मैं अगर इससे ज्यादा लंबी बात करूंगा तो बहुत तफसीलन हो जाएगी, लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आपको कही हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Kashif Saab. Your recommendations are very well noted, ji. Moving on, Dr. Shehla. वैसे तो you did mention a couple of recommendations earlier, but ma'am, what would be the top 3 policy measures that you would like to recommend to the government at this point? Sorry, Mahnoor. Sorry. I just got caught up in some signing of the papers. आप मुझे जरा दोबारा बताएंगे please? जी मैम, बस I was asking you at this point in time, what are the top 3 policy measures that you would like to recommend to the government? Budget के हवाले से, keeping in mind the budget. हाँ, एक तो ये है deregulation of the price. प्राइस की डिरेगुलेशन करें, उसकी लिस्ट छोटी करें जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स उन तक आए, ताकि हमारी प्राइसेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि अगर हमें वो हमारी लिस्ट बना दे, दिस इज द टाइम टू मेक द लिस्ट, ताकि हम थोड़ा सा हमें ब्रीजर मिले ना, कि हम फार्मास्यूटिकल को अलाइव रख सकें। एक तो ये पॉलिसी। दूसरा, जैसे अभी काशिफ साहब ने कहा कि जो पॉलिसी आ रही है वो ये आ रहा है कि हमारा उसके ऊपर जो डॉलर्स के ऊपर 12% और लगा दिया है। आपको शायद आई थिंक काशिफ ने ये मेंशन किया ना, अभी पॉलिसी
3:30 बजे अनाउंस हुई है। While we were talking, the policy was announced कि वो जो डॉलर्स हम अब हमारी जो LCs खोलेंगे ना, उसके ऊपर फर्दर 12% उन्होंने लगाए हैं, हाँ, ताकि हमें उन्होंने फैसिलिटेट किया कि हम आपकी LCs खोल देते हैं, लेकिन 12% एक्स्ट्रा लगाकर, ये जो मुझे पता चला है। अब दिस इज लाइक अगेन द सेम पॉइंट कि वी नीड टू हैव सम ब्रीदर कि हमें प्राइस की तरफ से छूट दे दो ना, कि हम उसको अपनी अपनी नेचुरल कंपटीशन में चले जाएं कंट्री में। वाई शुड दे बी कंट्रोलिंग आवर प्राइसेस? हम खुद ही कंट्रोल करेंगे, हमने बेचनी नहीं। जब बेचेंगे तो उसको रीजनेबल प्राइस पे रख के बेचेंगे ना। ये दो चीजें हैं। और तीसरा हमारा ये वही जो रिफंड्स का इनका मसला है, वो तो बात कर चुके हैं कि जो हमारे रिफंड्स हमारे आई थिंक जनवरी के बाद के, लास्ट जनवरी के बाद के रिफंड्स नहीं आए हुए। इट्स लाइक 1 year नाउ। मतलब ये इसी तरह हम देते जाते हैं, करते जाते हैं, देन हम इसी के पीछे, वही बातें, अपने पैसों के पीछे भागना पड़ता है। तो ये, और चौथा जो हमने कहा कि एक्सपोर्ट काउंसिल जो है ना, वो हमारा डिमांड है, ताकि फार्मा को ये समझते नहीं है। एक छोटी सी जो इन्होंने डेस्क ऑफिस बनाया हुआ है ना फार्मा के लिए, एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में एक डेस्क बना हुआ है फार्मा का। अब डेस्क इज अनएबल टू हैंडल द होल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। वी हैव 675 इंडस्ट्रीज। उसको कोई हैंडल करने के लिए कोई पूरा एक बराबर एक डिपार्टमेंट तो बनाए जो हमारी बातें समझे और हमें वो हेल्प करे। थैंक यू। Thank you very much, ma'am. Rehan साहब, perhaps मैं अगर आपको रिक्वेस्ट कर सकूं नेक्स्ट के मिनी बजट और फिर जो फेडरल बजट है उसको मद्देनजर रखते हुए कोई टॉप 3 पॉलिसी मेजर्स आप जो महसूस करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को इस पॉइंट पे काफी सपोर्ट करेगी सर, अगर आप शेयर करें। जी महनूर, एक्चुअली आई हैव 3 more than 3 points if you allow me, हैं छोटे-छोटे। देखिए, सबसे पहले इस मुल्क का जो हल है वो है, जैसे मैंने पहले बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी and confidence of the stakeholders. Every stakeholder should be on board along with all the political parties. जब तक हम ये सबसे बेसिक है हमारा, जो मैं समझता हूँ। उसके बाद जो हमारी जो भी पॉलिसी तय करे, कम से कम 20 से 25 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैं एक थोड़ी सी बात मुझे ऐड करनी पड़ेगी। हम बाकी बातें करते हैं, फलां मुल्क ने तरक्की कर दी, फलां मुल्क ने तरक्की कर ली। हम अपने नेबर्स की जिनकी तरक्की, हम जो हमारे जैसे हैं, मिसाल बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, हम इन्हीं की पॉलिसी देखें कि उन्होंने इतनी तरक्की कैसे कर ली। हमें दुश्मन मुल्क होना इज अ सेपरेट थिंग, बट कम से कम उनकी जो अच्छी पॉलिसीज हैं वो तो ले सकते हैं ना। तो हमें कम से कम उनकी पॉलिसी को विजिट करें, क्योंकि हमारी पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई इशू है जो हम अपना डाउन हो रहे हैं बजाय तरक्की करने के। अच्छा, सब उसके बाद हमें जो कॉटन सीड या वीट का सीड है उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसकी प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, हम अपनी गंदम की और कॉटन की, तो उससे हमारे इन पर इंपोर्ट का कम पड़ेगा और हम अपनी इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसी के साथ जैसे आगे बात की, शायद रिमेंबर, शायद काशिफ भाई ने बात की कि हम अपने हमसाया मुल्क से ट्रेड ओपन हमें करनी पड़ेगी। हम कब तक महंगी चीजें मंगाएंगे? देखें, पिछले दिनों फ्रेट्स के इशू थे, चाइना से बहुत ज्यादा फ्रेट के इशू थे, $8,000 पे चले गए थे। अगर हम अपने नेबर कंट्री से ले आए, विद इन डे माल पहुंच जाता है और वो रॉ मटेरियल सस्ता माल पहुंच जाता है। तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। और ये हमारी तमाम उन लोगों को जो हमारे डिफेंस पॉलिसीज बनाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमें कब तक ये, देखिए लड़ाई तो है, इसमें मैं नहीं कहूंगा, हमें अपना राइट भी लेना है, हमें इश्यूज को भी सॉल्व करना है, बट हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी को भी स्टेबल करना है। हम कब तक ये $2-3 बिलियन एक्स्ट्रा बढ़ के, और हम जो IMF से 5 या 6 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो $2-3 बिलियन तो हम यही सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह बात की, मैंने भी पॉइंट नोट किया था, बात की हमारे स्टेट ओन्ड, स्पेशली लाइक PIA स्टील मिल्स है, इन पे हम कब तक अपने पैसे जाया करें। और जो दूसरी सबसे लास्ट बात कि इन्वायरमेंट पैदा गवर्नमेंट का काम है करना, गवर्नमेंट का काम जॉब्स पैदा करना नहीं है। इस तरह की इन्वायरमेंट पैदा करें जिससे कि इंडस्ट्री के अंदर या बाकी जगह ट्रेड के अंदर उनकी जॉब क्रिएट हो। तो जॉब से तो लोग पहले ही क्यों फारिग हो रहे हैं? इसी वजह से कि हमारी वो पॉलिसीज में कहीं ना कहीं ऐसा इशू है जिसकी वजह से लोगों को अपनी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ रही है। तो ये इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जॉब देना नहीं है, गवर्नमेंट को ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करना है ताकि मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चले और जॉब्स क्रिएट हो। तो ये मेरी तरफ से इतना ही है जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rehan Saab. Moving on, Anis Saab, perhaps I can request you to put forward your recommendations to the government.
Ji. Mahnoor, I had pretty much actually covered what I had to do during my first round of the discussion, where I feel the government has to come up with whatever the policy is. They need to clarify it to us, and they need to give us this now, somehow give us this comfort that this is something which will stay there regardless of a government, regardless of the financial situation of the country. I think that's the most critical element. The second is, I think usme government itna role play nahi kar sakti. We, all of us here, the education system and as well as the industry needs, and more importantly, the world industry needs. And for me, third and very precise is how the government has to come in for the support of the agriculture sector. Like, for example, I have served on the MEPCO board in the past, and MEPCO में सबसे बड़ा line losses आते हैं वो ट्यूबवेल्स के आते हैं, एग्री से आते हैं, और ट्यूबवेल्स जो है उनको 50% जो है ऑलरेडी सब्सिडाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी. So a very simple solution is, which I've been knocking at the government again and again, is कि उन सबको सोलर करवा दें, गवर्नमेंट अपने फंड से करा दे one time. They would not need any electricity connections. MEPCO की भी आपके line losses खत्म हो जाएंगे, and more importantly, जो हमारा farmer है उसके लिए भी cost of doing business बहुत कम हो जाएगी. So agri sector is where a lot of government intervention is needed in terms of the technical skill as well as the support in terms of highlighting the farmers of the potential they have. So these are my thoughts. Thank you. Thank you very much. Thank you to all my speakers here for their extremely valuable recommendations. Lastly, I'd like to invite Dr. Vaqar Ahmed for his closing remarks. Sir, over to you. Thank you, Mahnoor. Let me start by thanking Anis Saab, Rehan Saab, Kashif Saab, and Dr. Shehla for their time. I see a lot of interest of our participants who have joined us over Zoom, as well as the questions that we have been receiving over the Facebook as well as other live mediums. I think there is there's an inventory of very good solutions which have been offered by our panelists here, something which of course SDPI can promise to really sum up and submit to the government next week. And I believe that SAPM to a Prime Minister who's receiving the budget proposals is really looking into such advice which is actionable in the short term, but also measures which are necessary to be taken in the medium term. Now, if I just have to sum up for the convenience of our participants who may have joined late, I think our esteemed colleagues have actually contributed to both sides of the budget, which is the taxation measures as well as the expenditures, expenditure side of the budget, which are required to bring down the cost of doing business, to promote an enabling environment for SMEs, agricultural firms and startups. Having said so, I think now, if I'm hearing our colleagues correctly, now is the time where, of course, Pakistan needs an early agreement with the IMF and the authorities visiting, the IMF staff authorities who are visiting Islamabad. One would like to see an early agreement around the 9th review, so that the market gets the right kind of signal and the panic that we are currently seeing is slightly relieved. Having said this, any tranche by the IMF or the other funds which IMF's agreement will unlock, including the funds by the World Bank, Islamic Development Bank and ADB, will only be a short-term breather. Pakistan has large debt repayments coming up during the next 3 years, for which we believe that debt restructuring would be required. And for this, I think now is the time to engage with both institutional, official, bilateral
lenders who have been helping Pakistan. And this debt restructuring would also give confidence to those who are investing in terms of development loans or in terms of FDI, those who want to invest in Pakistan. At least it will give them some confidence that there is a debt management plan in place, which the government now needs to demonstrate. Once, of course, we have our macro fundamentals stabilized after the 9th review, then we believe that it will be time for Pakistan to really, until the budget, until June and July, to really walk the line where it shows that it is sticking to the policy line which it has taken with the IMF in the tax space, in the energy space, state-owned enterprise space, as well as the other structural reforms. And why do we say so? Because, of course, in July, once this program ends, Pakistan would need to demonstrate credibility so that it can access the next IMF program after July. And a successful accessing the next IMF program successfully will then also unlock the bond market. Pakistan can move into a launch of maybe a fresh issue of bond to service its debt requirements. This is also then going to help the revival of remittances, which has been under pressure, which we also heard from Rehan Bharara Sahab, who rightly said that the actual rate in the market was much higher than, of course, the interbank, which prompted the diaspora or the overseas Pakistanis to either hold back the dollars or the foreign currency which they send, or send it through the non-official channels, which has harmed the economy. So certainly fixing the macro fundamentals will also help getting the remittances back on track through the formal channels. We also felt that, of course, once you have the 9th review done and it manages to revive the economy a bit, then slowly and gradually, of course, the revival of growth, at least in key sectors and export-oriented sectors, could also relieve the pressure on FBR. Currently, there's a shortfall of 200 to 300 billion rupees, you know, which can only be efficiently fixed by revival of growth. Perhaps putting additional taxation measures is only the second best solution, which is going to add to, of course, a reduction in welfare and rise in cost of doing business. Having said this, of course, every crisis is an opportunity as well to really restart, go back to the drawing board, think what we have missed in the past, and as one of the panelists said, also look at the peer economies. What is it that they are doing which we can borrow as an example? So with this, I think just as a closing, let me again thank my fellow panelists and the participants who have taken time out to join us for this webinar. Thank you. Thank you very much, Dr. Vaqar. And with that, I'd like to conclude this session today. This was the second session of our webinar series, and we'd request you to stay tuned for more. We'll be having these weekly. Thank you very much. Nafis.